अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद ख़ान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं हूं पाकिस्तान ब्लॉकचेन समिट पे। जी हाँ, बड़ी अच्छी समिट जा रही है। इंटरनेशनल हमारे पास स्पीकर्स आए हैं आज डिफरेंट कंट्रीज से, 6 कंट्रीज से हमारे पास डिफरेंट स्पीकर्स आए हैं जो कि एक्सपर्ट हैं ब्लॉकचेन के हवाले से, और वो आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये जो ब्लॉकचेन समिट है, पाकिस्तान ब्लॉकचेन समिट, ये ऑर्गेनाइज़ की गई है इजाद लैब्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के इश्तराक से, और BSV जो है इंस्टीट्यूशन, उनके इश्तराक से भी ये समिट अरेंज की गई है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं और भी इंटरव्यूज़ करूँगा मैं, और जितने भी स्पीकर्स हमारे पास आए हुए हैं, यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, उनसे मैं बात कराऊँगा, आपकी मुलाकात कराऊँगा उनसे पहले। इस वक्त मेरे साथ एक बड़े अच्छे स्पीकर मौजूद हैं, बड़े अच्छे पैनलिस्ट हैं जो BSV एसोसिएशन के हेड हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए चल के उनसे मिलते हैं। Hello. Hey, how's it going? I'm good. Nice to see you. Same here. How are you? I'm really good, thanks, Bilal. Okay. Better now that I'm talking to you. Okay. You can have this mic. I can have this mic. Yeah. Just put this on here. Yeah. First of all, welcome to Pakistan and welcome to Islamabad, the beautiful. And I would like to ask you, you have to answer to my viewers that how's your experience going on? 2-3 days we are here for the conference, for the blockchain summit. So how's your experience going on? How you like it? Oh, I am loving it here in Pakistan. First and foremost, because of the hospitality that we've been shown. We're here on a government delegation, and so far everyone that we've met, right down from the people helping us check in at the hotel to the great, developers and tech experts here, Bilal, all the way to the government ministers. It's just been so welcoming, so engaged. I think I've just been very impressed with the level of engagement and blown away, really, like humbled. I would say is the right word. Okay. Secondly, I want to ask you that what BSV is association. What's the working of BSV association? What they work, what they do? Well, so the BSV Blockchain Association is based in Switzerland, and what it does is it supports all of the member organizations who are building applications on the BSV blockchain. Okay. So BSV is a specific type of blockchain with a focus on scalability, micropayments, and fast throughput. That's really the emphasis. Unlike other blockchains, BSV blockchain is very much focused on utility. We want our blockchain to be used and not just speculated upon like other digital assets out there. Okay, that's nice. That's nice. Sounds good. Secondly, my question is, what's the future of blockchain? What's the future? What we'll see, if you can put some light on it, what we'll see in the future in blockchain? I think the future really is blockchain, rather than what is the future of blockchain. I think particularly at this conference, you see so many different use cases for blockchain, and it really brings home the idea that blockchain can disrupt everything. So we've already heard how blockchain can disrupt gaming with NFTs, but also the tokenization of assets like shares, or even shares of ownership in houses. When we met with the president earlier this week, we discussed putting the voting system on the blockchain. And that seems like a really easy use case for me, right? Because blockchain is all about auditable, verifiable data, right? And what better use case for that than democracy, right? Yes. You want to make sure that the votes that are being collected have been properly collected and they belong to a real person. There's no election fraud or anything like that. So that to me strikes me as one of the most exciting. That's really good. That sounds good. At last, I want to ask you the last question. That what message you want to give the persons who want to come in blockchain, who want to do a research on blockchain, or who want to build up an organization regarding blockchain? What message do you want to give? Well, I think the beautiful thing about blockchain is, like I said, the applicability is in so many different areas. So if you're someone who's driven and you want to get into software development, really any path is open to you as far as blockchain goes. As I was listening to use cases before, I mean, there are so many more than that. If you have a great idea, you can bet that there's an application for it on the blockchain. Okay. Thank you very much for giving us your time. Inshallah, we'll have some more discussion next time. Absolutely. Okay, thank you very much. Thank you. जी व्यूअर्स, मेरे पास एक और स्पीकर मौजूद हैं जो एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं। उनसे हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के हवाले से, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। तो आइए चल के मिलते हैं जिहाद वहाब से। अस्सलाम वालेकुम।
How are you, Sajjad? Good, good. Thank you. How about you? I'm good. Okay, take your mic here. First of all, you tell me about your organization, which is working on blockchain. How it's working on blockchain, and what are your experiences in it? You can put Yeah. the mic over here. All right. Yeah. So the company that I work at currently is called Enchain, and I just presented our platform solution called Kensei. And what we do is we basically abstract away a lot of the complexities with the blockchain. We make it very seamless and frictionless for people to use the blockchain without having to deal with a lot of the lower layers. And try to leverage the power of the blockchain without having to deal with a lot of the the obstacles. So we just make it very easy for you to take advantage of the blockchain. Okay. My second question is that how we use blockchain in our daily life. Yeah. As I mentioned on the panel, so blockchain is still very early and it's still maturing. So you can think of the early days of the internet. People were asking how are we going to use the internet in our daily lives, and in the early days, people sending an image online was like a big deal, and now we have live streams, videos sent, and years ago, decades ago, people never imagined, being able to stream data that quickly. They thought only, emails online. You have to be very technical to send an email. You have to, use you have to be a coder to write an email and stuff. But so this is, very similar thing happening with blockchain. And I think blockchain is like a, plumbing layer. So it's going to be used by a lot of people without them even knowing they're using the blockchain. The same way you use, any Facebook, Twitter, anything. You use it without knowing, how it works under the hood, the internet, how it works under the hood. Same concept for blockchain. Yes, very nice. Sounds good. My last question is that what message you want to give to the people who are coming, who are new to the blockchain? What message you will give to them? I guess it depends on the people. So different people are going to be, looking to use blockchain for different things. So obviously the end user, their lives are just going to, feel better. Their lives are going to get a lot better, more honest, more transparent, and they're not really going to, have to, realize why, but it's going to be attributed to the blockchain. A lot of people, business leaders, decision makers, what I'd like, them to get out of this is to realize, that we've got, a broad, range of tools and solutions that they can use to solve a lot of problems that they have. Thank you very much, Mr. Jihad Thank you. Wahab, for your time. Thank you very much. Okay, thank you. जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं नाइल साहब जो हैं हेड ऑफ मार्केटिंग है इन्वो जोन कंपनी के, तो आइए चल के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Doing well, teacher. चलिए माइक मैं आपको देता हूँ। So I guess कि पकड़ लेते हैं. That's okay, bro. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज आप पाकिस्तान ब्लॉकचेन समिट में आए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. तब बहुत से बड़े अच्छे इवेंट हुए हैं. गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर भी यहाँ सब यहाँ मौजूद थे जो पार्टीज एक्चुअली डिसीजन फॉर्म करते थे. सो ओवरऑल इट वाज रियली और मुझे लाइक भी बहुत अच्छी चीज़ें दिखी. ऐसी इससे इवेंट्स होता है कि पॉलिसी शेप करने में मदद करता है. सो दूसरा मुझे बताएं ब्लॉकचेन जो है ये इसके वजह से आप लाइक आपकी जो इन्वो जोन है वो क्या काम कर रही है ब्लॉकचेन का वजह से? हम ब्लॉकचेन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आपको टीम्स आपको एक दो रिसोर्सेज चाहिए या आप प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट हम वो बनाते हैं. जैसे हमारी टीम सो बेसिकली डेवलपर्स को ट्रेन करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, टीम्स प्रोवाइड. ठीक है, तो दूसरा मुझे बताएं आप हमारे व्यूअर्स को या हमारे बाकी जो लोग आना चाहते हैं ब्लॉकचेन में काम करना चाहते हैं, जो इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, जो इस फील्ड में बिल्कुल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू कमर्स, उनके लिए क्या मैसेज? I would say कि get started with the education first. जितना जल्दी हो सके किसी कंपनी के साथ क्योंकि जब तक आप इंडस्ट्री में नहीं आएंगे तो आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है क्या. बहुत सारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे बट उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा. सो दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. जब तक आप प्रैक्टिकली यूज करके नहीं दिखाओगे प्रोजेक्ट तो आप ये स्टैंड हो गया. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शाहबाज साहब, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू जी. मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़ात खान साहब, ये JIK यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. तो आइए चल के इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
فہد خان صاحب مجھے بتائیں کہ آج آپ آئے ہوئے پاکستان بلاک چین سمٹ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو آپ کیسا آپ نے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے پاکستان میں دیکھ کے کہ سارے لوگوں کو، سارے اسٹیک ہولڈرس کو، اکیڈیمیا کو، انڈسٹری کو، حکومت کو، سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے. یہی نیڈ آف دی آر ہے، یہی ہماری ضرورت ہے، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. دوسرا آپ ریسرچ بھی کر رہے ہیں بلاک چین پر، اس کے وجہ سے تھوڑا سا بتائیے گا بھائی کیا آپ ریسرچ کر رہے ہیں بلاک چین؟ جی، تو مقصد یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بیکم اے ویری بگ اکانومی. بھارت میں اگلے 8 سالوں میں 8 لاکھ نوکریاں جنریٹ ہوں گی اور $180 ارب کی اکانومی جنریٹ ہوگی بلاک چین میں. اس سال ان کی انویسٹمنٹ $7 ارب ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں بھی مقبول آئے، جو مارکیٹ کا ہے، بلاک چین مارکیٹ کا، ہماری معیشت گرو کرے، ہمارے بچوں کو یہ اسکل سیٹ آئے، اسکل سیٹ سیکھ کے اگلی جو ویب 3.0 ہے، جو انٹرنیٹ کا فیوچر ورژن ہے، اس میں سب سے بڑی کمپنی بنانے کے قابل بن سکے. آخری کوشچن آپ سے، آپ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو نیو کمرز ہیں، جو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آنا چاہ رہے ہیں، بلاک چین پر کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسیج؟ میرا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ یہ کرپٹو ٹریڈنگ کی طرف نہ جائیے. بات یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ $10 لگائیں گے اور اگلے مہینے میں $1 مل جائے گا. دس از ناٹ اے گیٹ ریچ کوئک اسکیم. آپ اسکل سیٹ حاصل کریں تو فیوچر میں سارے کامیاب ہوں گے. جو بھی اسکل کو اچیو کرتے ہیں، جو حاصل کرتے ہیں، جو بھی محنت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ملک کا بھی فائدہ ہے، ذات کا بھی فائدہ ہے، معاشرے کا بھی فائدہ ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فہد خان صاحب، آپ ٹائم دیے، تھینک یو. آج میں نے آپ کو سارے انٹرویوز کروائے، سارے جو پینلسٹ آئے تھے، جو اسپیکرز آئے تھے انٹرنیشنل اور نیشنل اسپیکرز جتنے بھی آئے تھے بلاک چین کے حوالے سے، ان سے میں نے آپ کی ڈسکشن کروائی، ان سے میں نے آپ کے انٹرویوز کروائے ان کے میں نے سارے. تو آپ سے کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹاکس ود بلال. تھینک یو ویری مچ.